तेरे सदाप्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकों अपेक्षा तुम्हें श्रेष्ठ करेंगे। जेबे तुम्हें सदाप्रभु अपना परमेश्वर बसुब तेबे एई सब आशीर्वाद तुम ऊपर वर्तिब ओ तुमर संग धरिब। तुम्हें नगर रे धन्य हब ओ क्षेत्र रे धन्य हब। तुम शरीर फल ओ तुम भूमिर फल ओ तुम पशुर फल अर्थात ओ वस्त्र ओ मेषपलर शावक धन्य हेब। तुम चांगुड़ी और मैदा दलिवा पात्र धन्य हब। गृह आसवा बेले धन्य ओ गृह बाहर जावा बेले धन्य हेब। सदाप्रभु तुम विरुद्ध में उठा शत्रु मानक तुम आगे आगे परास्त कराइबे। से एक पथ दे तुम विरुद्ध में आसबे मात्र 7 पथ दे तुम सम्मुख पलाइबे। ओ जे जे कर्म तुम्हें हस्त देव से सब आशीर्वाद प्राप्ति आज्ञा करेंगे। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो देश देवे कहले से तुमको आशीर्वाद करेंगे। तुम्हें सदाप्रभु अपना परमेश्वर का आज्ञा पालन और ताहां पथरे गमन कले सदाप्रभु अपना शपथ अनुसार तुमको अपना पवित्र लोक कर स्थापन करेंगे। पुणी तुम्हें सदाप्रभु नाम प्रसिद्ध अच्छ बोली पृथ्वी समस्त लोक देखिए और से माने तुम विषय भीत हेबे। सदाप्रभु तुमको जो दश देवा तुम पूर्वपुरुष मान निकट में शपथ कर तुम शरीर फल और तुम पशु फल और तुम भूमि फल मंगलार्थे तुमको वर्धिष्णु करेंगे। सदाप्रभु यथा समय तुम भूमि में वृष्टि देवाकू और तुम हस्तर समस्त कर्म आशीर्वाद करने अपना आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करेंगे। कहले तुम्हें अनेक गोष्ठी और लोक मान देव देव मात्र तुम्हें ऋण नेब नहीं। सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा मानव करने को मुझे तुमको आदेश करुँची से सब जब तुम्हें शुणव और मुझे तुमको जे जे वाक्य आज्ञा करुँची तुम्हें तहि मध्य कौन वाक्य दक्षिण कि बाम फेरी अन्य देवतागण सेवा करने से अनुगामी न हब। मात्र मुझे तुमको सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा और विधि आदेश करुँची से सब मानिया जब तुम्हें कर्णपात न कर तेरे यही सब अभिशाप तुम वर्तिब तुम संग धरिब। तुम्हार चांगुड़ी और मैदा दलिवा पात्र शापग्रस्त हब। तुम्हें गृह को आसवा बेले शापग्रस्त हब और तुम्हें गृह बाहर को जावा बेले शापग्रस्त हब। तुम्हें जो दश अधिकार करने जावस सेठार तुम्हें मैंने उच्छिन्न होगा पर्यंत सदाप्रभु तुम ठारे महामारी लगाई रहिबे। पुणे तुम मस्तक उपरिष्ठ आकाश पितल हब और तुम नीच स्थित पृथ्वी लुहा हब। सदाप्रभु तुम शत्रु मान सम्मुख तुमको परास्त कराइबे। तुम्हें एक पथ दे प्रतिकूल जीव मात्र 7 पथ दे आगु पलाइब। पुणी पृथ्वीर समस्त राज्य मध्य तुम्हें एणे तेणे स्थानांतरित हेब। सदाप्रभु तुमको निष्क्रिय बछ और अर्श जादू और खुजली द्वारा आघात करेंगे ए सब तुम्हें सुस्त हो पार नहीं। तुम्हें अंधकार दरांडी है तुम्हें मध्याह्न समय दरांडी बुल और तुम्हें अपना पथरे कृतकार्य हम ना। तुम्हें सर्वदा केवल उपद्रवग्रस्त और अपहृत हेब कई तुमको उद्धार करने को नथिब। तुम्हें गृह निर्माण कर मात्र तुम्हें तहिरे बास कर तुम्हें प्रस्तुत कर मात्र तहिर फल भोग कर तुम्हें गुरु तुम आगे हत हम मात्र तुम्हें तार मांस भोजन कर।
ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଦ୍ଧବ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଆଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ମାସ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ତୁମ୍ଭର ନଥିବ। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବେ ଓ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିରୋଧ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହାତର ବଳରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ତୁମ୍ଭ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିବ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଜାନୁ ଓ ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ବ୍ୟର୍ଥ ଦାୟୀ ପଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ତଳେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, ତୁମର ସେହି ରାଜାକୁ ତୁମର ଓ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଓ କାଷ୍ଠମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଆଶଙ୍କାର ଓ ଗଳ୍ପର ଓ ଉପହାସର ବିଷୟ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୋକ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ଚିତ ବୃକ୍ଷ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଚିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ। ତୁମର ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପଙ୍ଗପାଳ ଅଧିକାର କରିବ। ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ତୁମଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିବ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଋଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମସ୍ତକ ହେବ, ତୁମ୍ଭେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଆସିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଛ ପଛେ ଗୁଡ଼ାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁଳ ରୂପେ ପାଇନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କଲ ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବେ, ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷୁଧାରେ ଓ ଶସ୍ୟରେ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ କାନ୍ଧରେ ଗୁହାଳ ଜୁଆଳି ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଠିବାର ହେଲା ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ 40 ପଦରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ, ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବଧାନ କରୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅଭିଶାପ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଜଣାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 2022 ସାଲର 12 ମାସର ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ରାତ୍ରରେ ଏହି ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଦସ୍ୟଦୟ, ସମିତିଗଣର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତାହାର ପାଦପୀଠ, ସେ ପାଦପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଣୁ ଆଣୁ ପ୍ରଭୁ 2022 ସାଲ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ। 22 ସାଲର ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ରାତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ, ମନ୍ଦ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି এই শেষ রাত্রির শেষ দিনর শেষ রাত্রি আমাকে আনিছ, এথিপাই ধন্যবাদ দেউଛୁ বাপা। কিছু সময় পরে নূতন বর্ষ দেখবু, 2023 সাল দেখা পারিব। হ্যাঁ প্রভু, আমি জাঁয়া পারিব আমি প্রত্যেক অন্তর মধ্যে তুমি কথা কুহ। আমার এই গত এই 22 সালরে যেতক আমার বন্ধ করছু, অধর্ম করছু, পাপ করছু, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛୁ, ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। এই সমস্ত
अधर्म सब परित्याग करी प्रभु आगामी आम जो प्रभु नूतन वर्ष देखा पारुचे से नूतन दिन ठारू नूतन समय ठारू पूरा संपूर्ण पर्यटन आम शेष संध्या पर्यंत से नूतन भाव में जीवन काटबू नूतन भाव में प्रस्तुत हम नूतन भाव में समस्त कार्य करने प्रमाण प्रत्येक तुम्हें कथा कह प्रभु सन्ध्या समय आम प्रत्येक कथा कहल कारण तुम मंदिर को तुम सेवा करने आराधना करने प्रशंसा गौरव स्तुति वंदन करने धन्यवाद दौचु ए पर्यंत प्रभु जो मैंने आसपारी ना प्रभु से तुम्हें गंजना दियो यह एक विशेष दिन भावी तुम चंद्र को आसवाक पारे तुम दया कर आज दुईटी दास मान जो भाग्य तुम्हें रखिछ से भाग्य से प्रकाश करेंगे कहे प्रभु से भाग्य जेपरी भाग्य द्वारा आम प्रत्येक बुझी पारे तुम से ज्ञान प्रदान कर बापा मैंने भाग्य दे आम प्रस्तुत तुम्हें दया कर उपासना परिचालन करेंगे प्रियतम दास हाँ प्रभु उपासना जेपरी तुम से पवित्रता सौंदर्य उपासना परिचालन करने पारे तुम्हें दया कर प्रभु ये समय आम शेष संयम पर्यंत शेष उपासना पर्यंत आम बसबू आम सदा सर्वदा आम चिंतित मन थाऊ ए जागतिक मन सब दूर करी हाँ बाबा आम सुस्थ बसवा पारे तुम्हें दया कर प्रभु तुम से उपासना मंदिर चतुर्पार्श्व तुम रक्तर बड़ दियो प्रत्येक हमको शांति बसवा समस्त को साहाय्य कर ए समस्त प्रार्थना प्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछु पिता आमेन बसवा सतसठी पृष्ठार गीत आम गाइबा बाकी अच्छी बहुत दूर अच्छा बाकी अच्छी बहुत दूर चलिबाको नाही मग बाकी अच्छी बहुत दूर चलिबाको नाही मंगल पड़ुछि पुणी मुठुछि पड़ुछि पुणी मुठुछि सकति नाही महर बाकी अछि बहुत दूर चलिबाको नाही मंगल बाकी अछि बहुत दूर चलिबाको नाही मंगल तुम पिया It's so nice.
हालेलुया हालेलुया। इस समय में प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଳକ କରାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏହି ଶେଷ ଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।